आप लोगों आप लोगों में से किसी ने किया है क्या रिकॉर्डिंग वाला? नहीं ना? नो सर। ये ऑटोमेटेड हो रहा था। हो रहा है, कल भी यही हुआ था ना बीच में। यस सर, हुआ था एक बार। फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सो देर आर टू डिफरेंट अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग द रिस्क। रिस्क कैलकुलेशन के दो अप्रोच है। आप लोगों ने देखा भी होगा कहीं पर, अगर एक्सपीरियंस क्या होगा। फर्स्ट होता है क्वालिटेटिव, जहां पे वी वैल्यू देम लाइक लो, मीडियम और हाई। और एक होता है क्वांटिटेटिव, जहां पे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करते हैं, जैसे कि रेटिंग 1, 2, 3, 4, 5। कहीं पे आपको 10/10 के भी वैल्यू वाले मैट्रिक्स मिल जाएंगे, कहीं पे आपको 3/3 के मिलेंगे। आपको जो सिनारियो बेस्ड असेसमेंट आ रहे हैं, उसमें आपको मिलेंगे 3/3 वाले, आपके एसबीएम में। ओके, जब आप रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं आईजी2 में, वो आप वहां पे वो अलाउ करता है कि आपके साइट के हिसाब से आप मैट्रिक्स यूज कीजिए। ओके। सो हियर एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है। ओके, लाइक्लीहुड फॉर द लाइक्लीहुड एंड सिविरिटी। ये मैट्रिक्स को थोड़ा याद रखिएगा। लाइक्लीहुड के 5 रेटिंग किया हमने, सिविरिटी की 5 रेटिंग। ओके, लाइक्लीहुड रेटिंग 1 मीन्स एक्सट्रीमली अनलाइकली, यानी कि जो कंडीशन आपने देखा वहां पे लेवल ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ रिस्क जो है एक्सट्रीमली अनलाइकली है। लाइक्लीहुड अगर 2 है तो अनलाइकली है। 3 मीन्स पॉसिबल। 4 मीन्स likely, and 5 means very probable। नेक्स्ट, सिविलिटी की कैटेगरीज की बात करें। रेटिंग 1 सिविलिटी मतलब अगर जो कंसिक्वेंसेस है वहां पे अगर इंजुरीज वेरी माइनर है तो हम सिविलिटी 1 रखेंगे। अगर कंसिक्वेंस फर्स्ट एड इंजरी है, सिविलिटी रेटिंग 2 रखेंगे। कंसिक्वेंस लॉस्ट टाइम इंजरी है, 3 होगा। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट 4 एंड फेटालिटी 5। ओके, एंड यहाँ पे जो मैट्रिक्स है हिसाब से 0 to 2 वेरी लो, ग्रीन जोन आएगा। 3 to 4 लाइट ग्रीन। 4 5 to 9 मीडियम रिस्क, येलो जोन। 10 to 16 हाई रिस्क, ऑरेंज जोन। 17 to 25 एक्सट्रीमली हाई रिस्क, रेड जोन। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट फर्स्ट स्टेज देखेंगे जहाँ पे। ओके, इट्स कटिंग मशीन। ओके, टेबल कटिंग मशीन यूज हो रहा है विदाउट एनी गार्ड। ओके, सो यहाँ पे लाइक्लीहुड की रेटिंग अगर बात करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है चांसेस का? लाइक्लीहुड रेटिंग 4 कर दिया। ओके, कंसिक्वेंसेस अगर यहाँ पे वर्कर्स सेम कंडीशन के साथ काम करते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगा? रेटिंग कैन बी 4। एट द सेम टाइम हम इसको रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं, टू रिड्यूस द लेवल ऑफ रिस्क। जब हम इसमें गार्डिंग दे दे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लाइक्लीहुड रेटिंग 1 आ जाएगा। ओके, बट कंसिक्वेंसेस स्टिल इन 4। ओके, again evaluating the level of if you see this condition, यहाँ पे a worker is using toxic paint। ओके, बहुत ही हजारों टॉक्सिक पेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, टू एक्सपोजिंग टू दिस पेंट। यहाँ पे वर्कर भी एक्सपोज होगा जो यूज करें, along with that अगर आसपास कुछ लोग होते हैं वो भी एक्सपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे संभावना क्या हो जाता है, रेटिंग 3 हो जाता है। एंड कंसिक्वेंसेस 4 हो जाएगा। ओके, लेवल ऑफ रिस्क 3 into 4 12। ओके, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। So to reduce the level of risk, what we did, okay, we have provided low solvent paint, okay, which is very less toxic। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो पॉसिबिलिटीज है, ओके, पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम हो जाता है। कंसिक्वेंसेस भी पूरे एडवर्सली रिवर्स में आ जाता है, विच इज रेटिंग 2 and 3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। अगेन टॉक्सिक पेंट यूज हो रहा है। ओके,
सो यहाँ पे लाइक्लीहुड क्या है, रेटिंग हमने 3 दे दिया, कंसिक्वेंसेस रेटिंग 4 दे दिया, बिकॉज बाय एक्सपोजिंग टू दोस फ्यूम्स दे कैन फेस सीवियर इंजरीज। ओके, एंड यहाँ पे ओपन एरियाज में है। तो यहाँ पे इसको कंडीशन को कम करने के लिए हमने क्या किया, वी हैव प्रोवाइडेड ऑटोमेटेड सिस्टम। यहाँ पे वर्कर का डायरेक्ट एक्सपोजर है ही नहीं, राइट। एक आइसोलेटेड रूम दे दिया, ऑटोमेटेड स्प्रे पेंट इक्विपमेंट्स दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब आप ऑटोमेटेड सिस्टम इशू कराते हैं तो वहाँ पे लाइक्लीहुड भी रिड्यूस हो जाता है, कंसिक्वेंसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। सो ये जो हमने देखा यहाँ पे लाइक्लीहुड सिविलिटी कैलकुलेशंस, ये कंप्लीटली हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना परसेप्शन होता है। ये कंप्लीटली परसेप्शन बेस्ड assumptions होते हैं। यहाँ पे आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मैंने अगर यहाँ पे लाइक्लीहुड 2 दे दिया, ऐसा कुछ भी कोई और आपका परसेप्शन ये हो सकता है कि नहीं मैं इसको 3 दूंगा, कोई यहाँ पे रिस्क परसेप्शन 1 रखेगा कि नहीं बिल्कुल तो एलिमिनेट ही हो जा रहा है, वर्कर डायरेक्ट एक्सपोज ही नहीं हो रहे। सो कम्प्लीटली आपके ओन परसेप्शन के ऊपर डिपेंड है कि आप लाइक्लीहुड कैसे रेट करेंगे, सिविलिटी कैसे रेट करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू सिनारियो बेस्ड असेसमेंट, भले ही आपका रेटिंग कम ज्यादा हो जाए, बट जो कंडीशंस है वो तो नहीं बदलेंगे ना। जब आप सिनारियो में कंडीशंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि आप तो वहां से कंडीशन उठा सिनारियो से, सो कंडीशन सिनारियो के रहेंगे, बाकी जो रेटिंग रहेगा वो क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से, आपके परसेप्शन के हिसाब से आप रेट कर सकते हैं। लाइक्लीहुड इज लो, ओके, सो एंड सो रेटिंग, और सिविलिटी है सो एंड सो रेटिंग। ओके, इज इट क्लियर? अगेन आप लोगों ने ओबी नंबर 5 पढ़ा है सबने, राइट। वहां पे क्वेश्चन आया था, showing how the faulty compactor exposed worker to greater risk with the compactor safety protection device is not working. Workers were exposed to the significant greater risk. A good visual way to demonstrate and understanding this is to draw a risk matrix like one shown below. Okay, ये जो रिस्क मैट्रिक्स है, इस रिस्क मैट्रिक्स को आपको यूज करना है यहाँ पे फिलहाल। क्वेश्चन में भी ये रिस्क मैट्रिक्स आपको मिला रहेगा। सो इन टास्क 6A क्वेश्चन क्या है, assume that you are teaching someone who has never seen this kind of matrix before। आप सोचिए कि आप किसी को सिखा रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में, जिसने कि इस तरह का मैट्रिक्स अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6A का वन पहला क्वेश्चन जो है पे क्या बता रहा है, सो द मैट्रिक्स कैन बी यूज टू कंफर्म दैट risk level was acceptable when compactor risk assessment was initially carried out। ओके, यानी कि आपको सामने वालों को कन्विंस करना है, जो नए वर्कर है उसको ये कन्विंस करना है कि जब हम रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं कंपैक्टर मशीन का, तो वो जो लेवल ऑफ रिस्क जो है वो एक्सेप्टेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लो में दिखाना पड़ेगा लेवल ऑफ रिस्क को, तभी जाके भी ये एक्सेप्टेबल होगा ना। दिस लो कंडीशंस यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। At the same time, if you say question number 6(2), show how the matrix can be used to confirm that risk level change significantly with the safety protection device is not working। जब सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस काम नहीं कर रहा है तब लेवल ऑफ रिस्क बढ़ जा रहा है। ओके, हाउ डू यू जस्टिफाई? ओके, तो यहाँ पे समहाउ हमें दिखाना पड़ेगा लेवल ऑफ रिस्क हाई है जब हमारे सेफ्टी डिवाइस काम नहीं कर रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर? सो नाउ मैं क्या यस सर। करूँगा आपके लिए, ये वाला टास्क मैं करता हूँ, ये वाला आप होमवर्क करें। ओके, ओके, सो टू डेमोन्स्ट्रेट द लेवल ऑफ रिस्क व्हाट वी नीड, हमें चाहिए लाइक्लीहुड एंड सिविलिटी, राइट। सो लाइक्लीहुड के लिए हमें चाहिए अनसेफ कंडीशन एंड एक्ट। क्या अनसेफ कंडीशन हमने देखा, या क्या अनसेफ फैक्ट आपने देखा जिसके वजह से एक्सीडेंट के पॉसिबिलिटीज बढ़ जा रहे हैं। बट क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 6A का 1, इट मीन्स हमने रिस्क असेसमेंट करा हुआ है। ओके, रिस्क असेसमेंट किया है आपने, इट मीन्स आपने कंट्रोल मेजर भी दे दिया है। हाँ जी,
सो यहाँ पे कंट्रोल मेजर क्या क्या, अगर आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, यू हैव टू एज्यूम कि हमने सेफ्टी गार्ड लाइक रिस्क असेसमेंट किया, मीन्स जो भी गैप्स था इस कंपैक्टर के एक्सीडेंट्स को लेकर, वो गैप्स फुलफिल कर दिया, जैसे कि ओके बाय डूइंग कंपैक्टर। क्यों? इंस्टॉलेशन ऑफ सुटेबल गाड़ी, राइट। एंश्योर एडिक्वेट सुपरविजन, सुपरविजन में गैप था ना। और क्या क्या इंश्योर किया जा सकता है यहाँ? ओके। अवेयर ऑफ पर्सन टू यूज कंपैक्टर मशीन, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग वर्कर्स कुड बी फॉर अफेक्टिंग कंपैक्टर मशीन। लो, फॉलोइंग प्रॉपर एसओपीज करके भी तो एक पॉइंट बन सकता है सर। प्रिपेयर suitable SOP for compactor. Okay. Hence, with following precautions, laboratories could be rated very unlikely, na? Okay. यस सर। Then for the severity, by will help in the worst, हमेशा रिस्क कैलकुलेशन करते वक्त सबसे वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे। ओके, would be minor
फर्स्ट ट्रीटमेंट। अगर सब चीज आपने कर दिया तो सबसे वर्स्ट फर्स्ट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। फर्स्ट है और माइनर इंजरी। फर्स्ट एड यहाँ पे रेटिंग 2 है ना। फर्स्ट एड इंजरी। लाइट लोडेड सेवेरिटी 1 into 2, that is 2 ना, which is low ना। Okay, this is how you have to write. So will you all able to do that? हाँ जी। Any questions on it? 6 का 1 मैंने कर दिया, 2 आप कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे एडवर्स हो जाएंगे लाइट लोड के लिए। जैसे क्या अनसेफ कंडीशन है, जो कि कंपैक्ट अनसेफ कंडीशन या एक्ट है, जिसके वजह से वर्कर जो है विदाउट सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस कंपैक्टर को इसको एक्सपोज हो रहे थे। ओके, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू राइट। विल यू ऑल एबल टू डू दैट? बताइए, एनी क्वेश्चंस ऑन इट प्लीज। someone please take a screenshot of this answer ना। इस आंसर का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। ओके, so now we'll move forward if there is no question। तो ये एक होमवर्क रहेगा। ओके, 5 नंबर, 5 5 मार्क्स का टास्क है। Step 3 is about evaluating the risk principle to consider
when controlling the risks under Section 3.10.1 of ILO versus 2001 Guideline on Occupational Safety and Health Management System. Yeah. So, clause number 3.10.1.1 hazard and risk to the workers' health and safety. It should be identified and assessed on an ongoing basis. Type in a preventive and protective measures should be implemented following in order to priority. The first approach हमारा क्या होना चाहिए? When you see any occupational hazards, आपका first approach होना चाहिए कि first हम कोशिश करेंगे इसको कैसे eliminate किया जाए, right? Completely hazard को remove किया जाए. Then control the hazard from the source through use of engineering control or organizational measure. Minimize the hazard or risk by design or safe work system, okay, which include administrative control measure. And when you cannot, residual risk or hazard cannot be controlled by collective measure, the employer should provide for appropriate PPs, including clothing at no cost, and should implement measures to ensure its use and maintenance. Okay. So practical application of principle, like applying the general principle, hierarchy of control measure. Okay. Under clause 8.1.2 of ISO 2001-2008, organizations shall establish, implement, and maintain a process for elimination of hazards and reduction of the occupational health and safety risk using following hierarchy of control measure like elimination, substitution, engineering control, admin, and people. Here it is in detail. First आते हैं elimination. Eliminations mean completely removing the hazard, like this process of removing the hazard from the workplace. So it is one of the most effective way to control the risk because hazard is no longer exist. So it is one of the preferred way to control the hazard and should be used whenever possible. Okay. Then the substitution. Substitutions occurs when we are replacing new chemical or substance that is less hazardous is being used instead of substance. Okay, like first substance or hazard from the work. Okay, instead of another chemical. जो chemical सबसे ज्यादा hazardous है, उसके जगह 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 less hazardous चीज आते हैं, उसको हम substitution बोलते हैं. And sometimes grouped with elimination. कभी कभी आपका जो substitution है वो elimination के भी part हो सकते हैं. And the overall goal is to obviously to choose a new chemical that is less hazardous than the original. Okay. Next आते हैं engineering control. Engineering control are the method that are built into design of plant, equipment, and process to minimize the hazard. Engineering controls are very reliable way to control the workers' exposure as long as the controls are designed, used, and maintained properly. Example, the basic type of engineering control which include segregation, separation, barricading, safety device, guarding on the machinery, process control, PRV, pressure relief, enclosure or isolation of emission sources, provide ventilation, local exhaust ventilation systems. Okay. Next are the administrative control measure, implementing the process, identify and implement the process that need to work safely. Okay, it helps in changing the behavior of the people rather than actual removal of the hazard. Like PTW implement karna. Okay, developing safe working procedure, standard operating procedure, a reduced time of exposure, dose exposure limit or restrict procedure, ensuring clear procedure, a written if necessary are in place, guidelines, information, provide appropriate safety and health information, instruction, like ensuring that supervisor are adequately instructed, training, ensuring that the manager and workers are trained. Okay. Then supervision, signages, job rotation, planning and redesign of the layout, better housekeeping, improve workers' participation and engagement, health surveillance like audiometric test, vertigo test, spirometric test, provision of inspection or audit, policy updation or amendment, restrict access to the work area, restrict task only those competent or qualified to perform the work, reduce rescheduling the maintenance and other high exposure operation for the time when few workers are present, such as evening weekend, using job rotation schedule that limit the amount of time an individual or worker is exposed to a substance, keep equipment well maintained,
prepare and training for emergency response for incidents such as spillages, fire, or employee injury. Okay. Next आते हैं पीपी. Only after all the previous measures have been tried and found ineffective in controlling the risk to a reasonably practicable level, we must provide a personal protective equipment to maintain, like safety helmet, goggles, safety shoes, etc. Yes, PPE जो है vary करता है, depends on the type of task you're performing. Okay. तो जब आप एक suitable sufficient PPE select करते हैं, the factors to be considered while selecting the PPE, जैसे कि it should be appropriate for the risk, किसी भी तरह का hazard को आप एक्सपोज हो रहे हैं उसके लिए suitable होना चाहिए, ergonomically fit होना चाहिए जो पहनिए, should not increase overall, reasonable cost होना चाहिए, compliance with the standard, ensure compatibility of the item, hygiene and suitable to store होना चाहिए, adequate information, instruction and training देना चाहिए, enforce use of PPE, replace or repair damage or lost PPE. Okay. What are the benefits or limitation of the PPE? So it works as the interim control. Sometimes is a situational option, only control option. It's emergency backup के तौर पे यूज होता है. It's a cheap purpose, short term, immediate protection provide करता है ये आपको. Limitations की बात करें, it does not remove the overall hazard. Okay, only protect the wearer. Require good fit. Okay, for the wearer. It relies on the wearer. Require training. Uncomfortable होता है ये. May increase the overall risk. Incompatibility increase करता है. Unpopular. So often on one. Fails in danger. No good if wrongly selected. अगर आपने गलत पीपी सिलेक्ट किया है तो suitable नहीं होगा. Increase the chances of contamination. And it is expensive for long term use. लंबे वक्त तक यूज करने के लिए एक्सपेंसिव होता है. इसके भी क्वेश्चन आ चुके हैं. ओके. Like following hierarchy of control measure, you need to recommend the further control measure to reduce the risk or eliminate the risk. Like one of the recommendation from your investigation was to review the risk assessment. You decide to analyze existing control measure for the maintenance task where the contractor was injured. So using general hierarchy of control measure, a framework, comment on control measure used. ओके, hierarchy of control measure फॉलो करते हुए ये आपको कमेंट जो जो भी कंट्रोल मेजर यहाँ पे दिया गया है वहां पे उसके ऊपर आपको कमेंट करना है. एंड यू शुड सपोर्ट योर आंसर ऑफ एप्लीकेबल यूजिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो. यानी कि रिस्क कंट्रोल करने के लिए जो रिस्क कंट्रोल मेजर दिया गया है सिर्फ उनके ऊपर कमेंट करना है आपको. कोई एलिमिनेटिव कंट्रोल मेजर दिया है तो यू शुड स्पेसिफाई द एलिमिनेटिव कंट्रोल मेजर क्या है और उसका क्या इफेक्टिवनेस है. कोई सब्स्टिट्यूशन दिया है, इंजीनियरिंग कंट्रोल दिया है, चार पांच एलिमिनेटिव कंट्रोल मेजर जो पांचों के ऊपर आपको कमेंट करना है. ओके. अब इस सिनारियो को गो थ्रू करेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछेंगे. अगेन ओबी नंबर 5 में भी क्वेश्चन आया है, वही 6B में है. आई थिंक आप लोगों को ये वाला अटेंड करना चाहिए. ओबी नंबर 5 का जो क्वेश्चन है, व्हाट एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर कुड द सुपरमार्केट पुट इन प्लेस टू प्रिवेंट रिपीट एक्सीडेंट विद द कंपैक्ट. अगर आप ये फील कर पा रहे हैं तो इसके मेजरली एविडेंस जो आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं ना, सेम एविडेंस आपने ट्रेनिंग वाले में भी यूज किया है. राइट. आप एसओपी का ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो वुड यू नॉट रिकमेंड, आपको हमें क्या यहाँ पे एसओपी देना चाहिए. ओके. लाइक एज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना चाहिए वर्कर्स को, एडिक्वेट साइनेजेस प्रोवाइड करना, कंपिटेंट ऑपरेटर अपॉइंट करना, सुपरविजन अपॉइंट करना. बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर आप रेकमेंड कर सकते हैं. तो आपका राइटिंग मेथड क्या रहेगा, कंट्रोल मेजर दीजिए और क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्या कंडीशन देखा जिसके वजह से आप ये कंट्रोल मेजर दे रहे हैं वो आपको कमेंट करना है. जैसे कि वी आर अपॉइंटिंग सुपरवाइजर. ओके. सुपरवाइजर नीड टू बी अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर. तो जब आप उसका एविडेंस प्लस एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आप क्या लिखेंगे, क्या गैप था सुपरविजन का जिसके लिए आपको सुपरविजन देना पड़ रहा है. ओके. यू आर प्रोवाइडिंग जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग. क्यों दे रहे जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, बिकॉज ड्यूरिंग वर्कर्स वर गिवन ओनली a short induction, no job description have been provided for them. So for that reason we need to provide adequate job specific training. ओके. तो आप लोग ये वाला ओबी नंबर 5 का ही कर लेंगे. ओके. 6A का पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6B कर लेंगे. ठीक है, ये होमवर्क रहेगा. मैं आपके ग्रुप पे नोटिफाई कर देता हूँ, बाद में क्लास में भी डाल दूंगा.
V005 मैं होमवर्क कर दूंगा, अदरवाइज रिस्क असेसमेंट लोग को लेकर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ भी चुके हैं। आप उसको चाहे तो अटेंड कर सकते हैं और ग्रुप पे भेज देंगे तो मैं रिव्यू कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमें टर्म सुनने मिलता है, रेसिडुअल रिस्क। So residual risk is about inherent risk, the present, the represent the amount of risk that exists in absence of countermeasure. So residual risk, which is known as the remaining risk, is the amount of risk that remain after controls are accounted for. So for example, residual risk is given by use of automatic seat belt. Okay, so installing and use of seatbelt reduce the overall severity and probability of injury in an automotive accident. However, probability of injury remains when in use. So that is reminder of residual risk. Like जब आप ड्राइव कर रहे हैं, यू आर यू वेयरिंग शिफ्ट बेल्ट, तो अगर कोई सीवियर एक्सीडेंट होता है तो क्या ये कंप्लीटली आपको प्रोटेक्ट करेगा? हाँ जी, नहीं ना, कंप्लीटली प्रोटेक्ट तो नहीं करेगा ना। कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो क्या ये बिल्कुल ही आपको हार्म होने नहीं देगा सीट बेल्ट? नहीं ना, एयरबैग्स हो हम्म। या सीट बेल्ट, माइनर इंजरीज तो रहेगा ना। सो रेसिडुअल रिस्क किसको बोला जाता है? आपने एक पोटेंशियल हैजार्ड देखा, देखने के बाद आपने दिया कंट्रोल मेजर, बट डिस्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल द कंट्रोल मेजर, वो जो रिमेनिंग कंट्रोल मेजर जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल कंट्रोल। ओके, रिमेनिंग जो रिस्क बच जाता है उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल। ओके, जिसको कि जहां पे ये ज्यादातर आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप हजार को एलिमिनेट ना कर पाओ, क्योंकि हमेशा हजार को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होता, राइट। कुछ अमाउंट ऑफ रिस्क हाथ में रख के आपको काम करना पड़ता है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू ऑफशोर और ऑफशोर एक्टिविटी, इवन इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, हर जगह पे ये देखने मिला है, राइट। सो रेसिडुअल रिस्क इज ऑलरेडी ऑल्सो ऑलवेज देयर। तो कॉमनली ऑब्जर्वेशन तो हम अपने स्कैफोल्डिंग को भी कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल, even ensuring in the heights some safety precautions also, but there is also some risk was there. राइट, हर एक्टिविटी में है, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर केसेस है जहाँ पे कंप्लीटली आप एलिमिनेट करते हैं। Next is time scale and priority. Again, prioritizing time scale for the hazard. Okay. And giving priority is completely depends on organization to organization. So prioritization of risk control measure is depend upon the risk rating as high, low, medium. So high risk, high priority actions, low risk, low priority actions. So time scale and deadline may vary and depends upon the control measure. Example, installing hydrant system is required to prevent the fire spread at high risk hazard at site. It may take around 3 to 6 month time frame. At the same time, fire extinguisher आप immediately provide करा सकते हैं. So again, low cost easy action should be taken even if it is low priority. यानी कि आपका हाई प्रायोरिटी क्या था यहाँ पे, हाइड्रेंट सिस्टम का, बट इसके लिए आपको 3 से 6 महीना लग जाएगा, बट उसके बदले आपने क्या कर दिया, फायर एक्सटिंग्विशर दे दिया फिलहाल के लिए, जबकि ये उतना प्रायोरिटाइज नहीं था एज कम्पेयर टू योर फायर हाइड्रेंट सिस्टम। So it depends on the situation, it depends on the conditions and the perception of the organization to allocate the time scales, okay, and prioritize the actions. Next, step 4, record the findings. So typical content to be should be recorded in the findings. In our risk assessment, it should identification of the activities or areas accessed in the others, identification of the group in risk who might be affected and how, evaluate the risk and adequacy of existing control measures. Considering consider significant hazard, appropriate control measure have been considered or not. Action plan for implementation and further actions needed, like precautions to be reasonable and remaining risk is low. Date of assessment and name of the competent person or accessor. Review date, review and conditions need to be specified. Then circumstances to review, like when you require to review the controls or review the risk assessment. It's like if there is any significant changes to work method or process in substances, okay, on introduction of new technology or equipment,
on work environment, organizational key personnel, changes in law or legal requirement. Your risk assessment also no longer valid after and need to review, like after accident, incident, after near misses or dangerous occurrence, after ill health cases. Okay. Also, periodically we need to review the control measures, like annually. It depends on your policy. कोई annually review कराता है, कोई quarterly, कोई half yearly review कराते हैं. And on the recommendation based also investigation team ने recommend किया, enforcement authority ने recommend किया, auditor and other insurance agencies और workers complaint करते हैं. ये सारे circumstances है जब आपको risk control measure को review करना चाहिए. Okay. Is it clear the stages of risk assessment? Any question, please? No? Okay, then we'll move forward. Next is risk rating. So risk rating is assessing the risk involved daily activities in the organization. Okay, and clarify them as low, medium, and high on the basis of impact on the organization. So ranking or prioritizing the hazard is only one way to determine which hazard is most serious, those which to control first. So priority is usually established by taking into account employee exposure, potential for the incidents, injuries or illness. By accessing and priority to the risk, you are creating or ranking or action list. Okay. Like low, medium और high ये completely organization to organization vary करता है. क्या possible consequences है वो define करता है कि हम कैसे rate करेंगे risk को. So यहाँ पे कुछ general example है. Okay. Like for example, very low risk, a low rated event, one with little no impact on the business activity and reputation of the firm. Example, busy day housekeeping not done. Low to medium, like risk event which can impact on a small scale are rated as low to medium risk. Example, oil leakage from the machinery. An injury that requires first aid only, short-term pain or irritation. Medium, an event that would result in risk that can cause to impact but not serious one is rated as medium. Example, machine stop due to overheating. Sprain, strain, localized burn, dermatitis, asthma, injury required day off. Next, medium to high, like severe event that can cause to loss of business, but effects are below a risk that is rated as very high, like collapse of scaffolding. Okay. Next, very high, a major event that can cause reputational and economic damage that will result in huge business and client-based losses. Example, major fire, toxic gas release, major fracture, poisoning, significant loss of blood, spread of serious head injury, fatal diseases. Okay, these are the example of your, okay, these are the type of risk how we do categorized. Okay, got it. Next is application of the risk assessment for specific type of risk and special cases, like for the vulnerable people, like hazards and risk for the young person. क्या जैसे कि young person किसको consider करेंगे? Those who have under the age. Okay, as per national UK national law, under age 18 will consider the young people. Lack of experience, lack of physical and mental maturity. Okay, poor risk perception. Easily they can easily influence with the peer groups. Eagerness to impress, दूसरों को impress करने के intention में रहते हैं. Horse play का chances बढ़ जाता है. Being unaware of existing or potential risk. So क्या control measure हम दे सकते हैं? Provision of certain high risk activity, example high risk machinery. Restrict work pattern and hours, no overtime. Training and supervision need to be provided, like adequate information, instruction, training and supervision need to be provided. Then expectant mothers जो होते हैं उनको क्या potential hazards, exposing to the chemical, biological agent like different viruses को expose हो सकते हैं. Manual load handling, whole body vibration का risk होता है. Ionizing radiation या non-ionizing radiation को expose हो सकते हैं. Night shift, stress or bullying, chances of exposing to violence, physical shock, including direct blows to abdomen, exposing to the noise, excessive heat or cold, movement of posture which are abrupt or severe or give a rest to excessive fatigue. Then hazard to disabled workers, उनके लिए क्या पॉसिबल हजार्ड्स होते हैं? डिसेबिलिटीज के दो तरह के होते हैं,
एक है विजिबल डिसेबिलिटी और एक है हिडन डिसेबिलिटी। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द विजिबल डिसेबिलिटी, जो कि हम किसी बंदे को, किसी सामने वाले को देख के जान सकते हैं, लाइक कोई अंधा है, कोई बहरा है, ओके। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी लाइक जो मानसिक स्तर से, जो थोड़े किसी को देख के आपको पता चल जाता है, ओके, भले ही वो अंधे बहरे या इस तरह कुछ ना हो, फिजिकल डिसेबल ना हो, बट उनके हाव भाव को देख के आपको पता चलता है दे आर डिसेबल, जिसको कि हम इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, ओके। मानसिक स्तर से जो बीमार होते हैं उनको बोला जाता है उसको स्पेसिफिकली। देन हिडन डिसेबिलिटी क्या होता है, जो आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई ना करें, जैसे कि किसी को अस्थमा है, किसी को देख के आप पता नहीं कर सकते कि इसको अस्थमा है, इसको डायबिटीज है, इस ये मेंटल हेल्थ कंडीशंस का इश्यूज है इसको, लाइक तुरंत ही हेलुसिनेशंस की तरह, इस तरह का जो केसेस होते हैं, जिनको आप तुरंत देख के आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, उसको हिडन डिसेबिलिटीज। So your risk assessment should take account of any particular risk for the employee with the disability, identify if there are any particular hazards or risks for the staff member with conditions such as restricted mobility, limited dexterity, impaired vision, impaired hearing, limited understanding, health condition or heart problem, epilepsy or asthma. Okay. So what are the planning for safe emergency for disabled workers? So the key steps in preparing for self-evaluation, which include initial review of organizational practice and policies. You need to develop an egress policy for your organization, plan for egress, implement your egress plan, measure the performance of your egress plan. Okay, review the performance of your egress plan. Then hazard and risk for the lone worker. So who all are the lone worker? Lone worker are specifically the worker, those who work by themselves without any supervision, away from eyesight or earsight. Example, contractors, self-employed people. People who work outside normal hours. Example, your cleaner, security person, special production, maintenance or repairing staffs, agricultural or forestry worker, service worker, like your drivers. So what are the hazards they might expose to? So hazard a lone worker may encounter, which include accident or emergency that arise out of work, including inadequate provision of first aid and sudden illness. Okay, inadequate provision of rest, hygiene, welfare facility, physical violence from member of public and or intruders. So what are the application of risk assessment for specific type of risk or special cases for the vulnerable people? Like what control measure could be implemented to minimize the risk to the lone worker? So the risk assessment should prescribe the control measure to be implemented in order to eliminate or minimize and identify the risk. Such control measure may include like communication is very important with the vulnerable people, control with periodic check, automatic warning signages like panic alarm, no movement alarm, automatic distress message, that is pre-recorded message sent if not actively cancelled by the operative, etc. Instruction and training in proper procedure. Example, code word for prevent potentially violent situation when combined with the mobile phone or communication. Arms and amenities, okay, ammunitions to be provided so as to protect themselves from physical violence, like public, जैसे कि आपके सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, उनके हाथ में डंडा वगैरह या गन वगैरह, वो सारे विद अप्रोप्रिएट लाइसेंस उनको हमें प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज रीजन टू कैरी आउट फायर रिस्क असेसमेंट। तो क्या क्यों हमें फायर रिस्क असेसमेंट करना चाहिए? टू प्रिवेंट हार्म टू द पीपल, टू कंप्लाई विद द मिल लॉ, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फायर इन द वर्कर्स। सो मेथड इज कॉमन, फर्स्ट आइडेंटिफाई द फायर hazard, क्या सोर्स ऑफ hazard है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म, evaluate and identify and implement the fire precautions, record the finding, plan and train the worker on it, review and revise is necessary. Same with other hazards as well. Noise hazard. In general, noise hazard हम तब बोल जाते हैं जब आप कंटिन्यूअसली किसी नॉइज को एक्सपोज हो रहे हैं, राइट। इन जनरल अगर आप बोलने जाए 85 डेसिबल टॉलरेबल होता है, राइट, फॉर ए इंडिविजुअल, ओके, रेगुलर वर्किंग आवर्स की बात करें तो इफ यू आर क्रॉसिंग लाइक यू गोइंग बियॉन्ड द लिमिट more than 85 decibel, it become okay unacceptable to work with. So standard conditions while you are doing the risk assessment.
related to the noise. So first we have to identify the noise hazard. ऐसा क्या अनसब कंडीशन या एक्ट आप देख रहे हैं जिसके वजह से आपको लग रहा है कि वर्कर नॉइस को एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे कि हम कोई कंपैक्टर यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने कंपैक्टर देखा, कंपैक्टर यूज हो रहा है, उसमें से 90 डेसिबल नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है। आइडेंटिफाई द हजार, आइडेंटिफाई कौन कौन एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कंपैक्टर मशीन में कौन था, सुपरवाइजर था, एक्सपीरियंस्ड वर्कर था, यंग वर्कर था, दो देम यू शुड कंसीडर। इवैल्यूएट द रिस्क, क्या लेवल ऑफ रिस्क था। ओके, आइडेंटिफाई द रिस्क एंड इम्प्लीमेंट द कंट्रोल मेजर, जैसे कि हमें आइसोलेशन करना है, पीरियडिक मेंटेनेंस देना है। ओके, इनका जो सेफ्टी गार्ड है वो इंस्टॉल करना है। रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, रिव्यू एंड रिवाइज एज नेसेसरी। ओके, next is DSC risk assessment. Identify the DSC hazard, identify the people who might be affected. Okay, evaluate the risk, identify the risk, decide the precautions required, record the significant findings, review and revise the necessary। ये देखिए, ये सारे जितने भी हम फायर के पढ़ रहे हैं ना, इस सारे के स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके 5 to 11 के स्लाइड्स में है। यू ऑल शुड गो थ्रू दैट। ओके, वो जेनरिक है, स्पेसिफिक तो आपके साइट के हिसाब से आपको मिलेगा, ये जेनरिक है, इन जनरल क्या क्या कंट्रोल होना चाहिए। ओके, और क्या टॉलरेबल लेवल है, इट कैन बी फॉर द वाइब्रेशन हो या डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट्स हो। ओके, जिसको कि यहाँ पे डीएससी बोला गया, इट्स अबाउट डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट्स। ओके, जैसे कि आप कंप्यूटर्स बोलते हैं, दोज वर कंसिडर्ड। सकीब जी हैव रेज्ड हैंड। तो क्लियर कर दिया आपने डिस्प्ले स्क्रीन जो बताया ना आपने डीएससी। सो दिस इज द स्टैंडर्ड पोजीशन आपका एक होना चाहिए। Okay, while you are working on a computer, so okay, like that's minimum distance. Okay, your hand position, your sitting position, your back position. Okay, that's a specific position that should be there. Okay, so अगर जैसे कि इन जनरल आपने कहीं पे देखा होगा, जैसे कि हमने असेसमेंट किया था, इस जनरल आप देखेंगे यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है। टूटा हुआ चेयर दे दिया, या किसी स्टूल में बैठ के वर्कर्स काम कर रहे हैं, लकड़ी के चेयर में बैठ के लगातार काम कर रहे हैं। कंप्यूटर दिया हुआ है, उसके माउस वगैरह सही पोजीशंस में नहीं है। कंप्यूटर एक जगह है, कीबोर्ड की 10 किलोमीटर दूर है, ऐसे जैसे ऑटो वाले चलाते हैं ना एक साइड होके, वैसे वो साइड पर कीबोर्ड रख के टाइप कर रहे हैं। स्पेस एनफ नहीं है, इसीलिए कंप्यूटर और कीबोर्ड के एक साइड में रख के रंग पोजीशन में टाइप कर रहे हैं। ओके, ये टिपिकल हजार्ड्स आपको आप एक्सपोज होते हैं व्हाइल यू वर्किंग विद द डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट इज मैनुअल हैंडलिंग। ओके, आइडेंटिफाई द मैनुअल हैंडलिंग हजार्ड। इन जनरल मैनुअल हैंडलिंग में क्या कॉमन हजार्ड्स होते हैं, जैसे कि ओवरवेट लिफ्ट लिफ्ट कराना, ओवर साइज लिफ्ट कराना। ओके, कोई ऐसा चीज जो आप बियॉन्ड द साइज है, या उसका शेप कुछ ऐसा शार्प है जिसको आप मैनुअली कैरी कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल हैवी ग्लासेस की बात कर लीजिए। ओके, भले ही वो लाइट वेट होते हैं, बहुत इतने शार्प होते हैं, या स्टील के कुछ डोर वगैरह हो गया, स्टील का कोई यूटेंसिल भी, कोई बर्तन वगैरह भी जब आप कैरी करते हैं, जैसे कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि नहीं पता नहीं, कुछ ऐसे पतीले भी आते हैं जिनको अगर आप कैरी करते हैं तो हाथ में छाले आ जाते हैं, राइट, या कट आ जाता है उसके साथ में, इसके वजह से। ओके, दैट वी कैन से ओके, वो आपके मैनुअल हैंडलिंग हजार्ड्स के अंदर कंसीडर की जाए। ओके, इफ यू आर हैंडलिंग समथिंग मैनुअली एंड यू आर एक्सपोजिंग टू द हजार्ड बिकॉज ऑफ सच कंडीशन, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर, यस सर। Next, identify the people who may be affected due to the manual handling. Evaluate the level of risk. Identify and implement the manual handling practices. Okay. Record the significant finding and review and revise as necessary. You know the clause. Next is assessment of the health risks for hazardous substance. Okay, hazardous substance में क्या कौन से आ जाते हैं, आप अगर गाइड देखेंगे, गाइड में भी दिया हुआ है यहाँ पे। इन्होंने hazardous substance में लाइक सीमेंट डस्ट या किसी भी तरह का टॉक्सिक फ्यूम्स को जब आप एक्सपोज होते हैं, those are considered under hazardous substance. ओके, आइडेंटिफाई क्या पोटेंशियल हजार्डस, क्या हजार्डस सब्सटेंस आपके साइड पे
इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके, किस तरह के हजारों सब्सटेंस आपके साइड में इस्तेमाल। आइडेंटिफाई द पीपल who might be potentially be exposed to, evaluate the health risk and identify any control measure needed and implement them, record the assessment and actions to be taken, and review and update wherever necessary. Okay. Next, acoustic effect. Like the acoustic effect are the short duration and appear fairly and readily usually during after single and short-term exposure to a hazardous substance. So such effect may be severe, require hospital treatment, but are usually reversible. Example, asthma type of attack, nausea, faintings. ये कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट आपको हो सकता है बाय एक्सपोजिंग टू hazardous substances. क्रोनिकल इफेक्ट किसको बोला जाता है? क्रोनिकल इफेक्ट डेवलप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोलन, लाइक कंटिन्यूसली जब आप किसी हजारों सब्सटेंस को एक्सपोज होते हैं, ओके, या रिपीटेटिवली एक्सपोज होने की वजह से विच आर इम्पैक्ट योर हेल्थ वेरी बैडली, ओके, विच में अनडायग्नोज्ड बाय मेन फॉर मेनी ईयर, ओके, लाइक रिपीटेटिवली एक्सपोजिंग टू एनी सॉल्वेंट, ओके, किसी भी केमिकल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप काम कर रहे हैं, लगातार आप देखेंगे जब आपको ओवरेज हो जाता है, या कहीं पे अगर आप एग्जांपल देखेंगे, जो जो लोग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में, या आई थिंक हम ए भी ऐसे भी बोल कह सकते हैं, जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ज्यादातर काम करते हैं, जब उनका रिटायरमेंट पीरियड हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद भी वो जो सब्सटेंस को इतने सालों तक, 25-30 सालों तक एक्सपोज होकर बैठे हैं, उसका इम्पैक्ट बाद में दिखता है। ओके। ओके, अगर आपने सही प्रिकॉशंस लिया तो सब सही चलता है। अगर अगर प्रिकॉशन सही नहीं लिया हुआ तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने कैंसर एग्जांपल, एस्बेस्टस, सिलिकोसिस, ओके, मेस्टोलिमा, मेंटल डिजीजेस, ओके, like fall into the chronical category. Okay, these are the typical consequences workers may face. So here we have completed this thing, element 3.4. Okay, ये टॉपिक थोड़ा लंबा था, इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया इसका। ओके, सो फॉर यू जितने भी असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं वो आपको करना है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा ज्यादा आने लगा है रिगार्डिंग अप्रोच ऑफ रिस्क असेसमेंट। ओके, अभी रिसेंट को ओबीज में अगर आप देखेंगे, पिछले 3-4 ओबीज में वहां पे क्वेश्चन आया है, बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली कमेंट ऑन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच टू एक्सेस हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। अगर आपको याद है साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्या हमने एक्टिविटी किया था, वेट, कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन क्या साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे था? जब हमने कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन का एक एक्टिविटी किया था, नहीं ना? नहीं, नहीं। ये से रिफर्बिशिंग वर्क जो है साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था ना, कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन को लेकर हमने किया था। होमवर्क नहीं दिया था मैंने, एक पार्शियल केस स्टडी दिया था, सिलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, उनके वेबसाइट में जाके आपने सर्च किया था। ओके, वो भी नंबर 15 से ही अलाइन था। उसी में एक क्वेश्चन आया है रिगार्डिंग अप्रोच ऑफ एक्सेसिंग रिस्क। ओके, और ये रिसेंट, वो भी नंबर 59 पे तो नहीं पूछा था, आप 58, 57 में देखेंगे, वहां पे भी अभी लगातार अप्रोच ऑफ रिस्क असेसमेंट को लेकर क्वेश्चन आ चुका है। सो व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट अप्रोच ऑफ रिस्क असेसमेंट, वहां पे आप ध्यान रखिए, ये पूछ रहा है जितने भी स्टेजेस आपने पढ़ा रिस्क असेसमेंट को लेकर। ओके, लाइक सिलेक्शन ऑफ द, लाइक कौन का कॉम्पिटेंट है कि नहीं, लाइक सिलेक्शन का अप्रोच, ओके, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का अप्रोच, हजार्ड इवाल्युएशन का अप्रोच, कंट्रोल मेजर का अप्रोच, इस सारे स्टेजेस कितने इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ है उसके ऊपर कमेंट करने बोल रहे हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन सिनारियो है, जो इन्फॉर्मेशन सिनारियो में है उसको लेकर बनाना। अगर आपको यहाँ पे ज्यादातर पॉइंट मिलेंगे रिस्क कंट्रोल मेजर को लेकर, एक पॉइंट आपको मिल जाएगा कॉम्पिटेंसी को लेकर, 3-4 पॉइंट आपको मिल जाएगा डेटा गैदरिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखा है इन्होंने, एक पॉइंट आपको मिल जाएगा किन किन से बात किया या बात नहीं किया वर्कर्स के साथ। उसके बाद जो ज्यादातर पॉइंट आपको मिलेंगे रिस्क इवाल्युएशन को लेकर, लाइक जो कंट्रोल मेजर दिए हुए थे कितने इफेक्टिव थे या इनइफेक्टिव थे। ओके, इन जनरल उसके ऊपर ही आपके टॉपिक्स पूरा गो थ्रू करेंगे। तो क्या आप लोग चाहे तो ये वाला क्वेश्चन भी अपेयर कर सकते हैं,
ओके, टास्क 6 ऑफ ओबी नंबर 15। टेक स्क्रीनशॉट। अगर असाइनमेंट ज्यादा हो जा रहा है, जिनको टाइम मिल रहा है वो ग्रुप पे करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। क्लास वर्क पे मैं एक ही दूंगा, कॉम्पैक्टर सिनेरियो वाला। बाकी ये वाला इंडिविजुअल एक वर्क रहेगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में बना के दे सकते हैं। ओके, आई विल डेफिनेटली वाल। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग एलिमेंट 3.4। सो अगर मैं आज जीआईसी 2 में जाता हूँ तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहेंगे। ओके, आई वांट यू ऑल टू बी थोड़ा फ्रेश होके, लाइक हम पूरा कंप्लीट डे डेडिकेट करें जीआईसी 2 में, ना कि ऐसे पार्शियली डेडिकेट करें पार्ट 1 to 4 समझने के लिए। सो एज ऑफ नाउ आई थिंक आप लोगों को एलिमेंट 3.4 तक क्लियर है। हाँ जी, रिक्स असेसमेंट क्या होता है ऐसे किसी में तो डाउट नहीं है ना। सो इफ यू आर क्लियर विद इट, टुमारो वी विल स्टार्ट विद जीआईसी 2। और जीआईसी 2 का मैंने सैंपल एक बनाने की कोशिश किया है, मैंने रिपोर्ट। सर सर ये 3.2 का थोड़ा व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे सर। 3.2 का क्या शेयर करना है व्हाट्सएप? हाँ सर, थैंक यू सर। क्या शेयर करना है 3.2 का? थैंक यू बोल के आप रहेगा। किसी का तो बैकग्राउंड सुनाया जा रहा है। ठीक ठीक। तो मैंने जो है ना, अ, एक पुराना रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, ओके, जीआईसी 2 मैंने ड्राफ्ट करने की कोशिश की है। कल मैं आपको क्लास में जब डिस्कस करूंगा वहां पे बताऊंगा। ओके, 1000 और जस्टिफिकेशन कंप्लीट करने की मैंने कोशिश किया है। और भी थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा फैब्रिकेशन चाहिए इसके ऊपर। ओके, खास करके पार्ट 2 और 3 में। जब पूरा हो जाएगा ना, कल क्लासेस के दौरान ही मैं इसको समझा दूंगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन करूंगा जहाँ पे आप 1000 लिखेंगे अपने टीम के साथ, और जस्टिफिकेशन पार्ट 3 भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर होके आ जाइएगा। और हो सके तो अ, कुछ हजार एलिमेंट 5 to 11 के जो टॉपिक है ना, वहां से कुछ हजार पढ़ के आए। बिकॉज इफ यू सी, हमने जो जीआईसी 2 का गाइडेंस अगर आप देखेंगे, सर जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इसी टाइप का रहेगा सर, लिखने के लिए सर। यही टेम्पलेट यूज करना है आपको, इसी का यही क्वेश्चन पेपर है। कोई सिनारियो नहीं मिलेगा, निबोस की तरफ से कोई सिनारियो नहीं मिलेगा। सिचुएशन आपको आपके वर्क प्लेस का बना के रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। इफ पॉसिबल आप लोग जो है ना, गूगल कीजिए या कोई भी एआई टूल चाहे तो यूज कीजिए, या अपने वर्क प्लेस के हिसाब से इन हजार्ड्स को पढ़ के आइए। ओके, एलिमेंट 5 to 11 के टॉपिक से। ओके, नॉइज, वाइब्रेशन, रेडिएशन, मेंटल इलनेस, वायलेंस एट वर्क, सब्सटेंस अब्यूज एट वर्क, एटलीस्ट इन सब चीजों के डेफिनेशंस गो थ्रू करके आएंगे ना, तो कल आपको समझने में आसानी होगा। ओके, रिगार्डिंग दिस हजार्ड, और इस गाइड को एक बार गो थ्रू कर लेना। तो कल कंप्लीट डे हम डेडिकेट करेंगे जीआईसी रिपोर्ट प्रिपरेशन को लेकर, जीआईसी। ओके या ओके सर। so that's all for today from my side. Is there any questions on your mind, please? हाँ जी, इज देयर एनी क्वेश्चंस? गौरव जी, शकीब जी, अमूल्य जी, सब लोग सो गए क्या? अच्छा, सॉरी। नो सर। लगा जी। जगह हुए। नो सर। सर जगह हैं, सर जगह हैं। ओके, क्लास कुछ बोरिंग जा रहा है क्या? नहीं हाँ सर, जी, नहीं सर। समझ में आ रहा है सर। हम ज्यादा रस तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं सर, नहीं। ओके ठीक, अगर थोड़ा ऐसा सा कुछ रस लगे है तो सर। मुझे बोल देना, तो हम असाइनमेंट वगैरह बीच बीच में एंगेज करेंगे, जिससे आप लोगों का भी नींद खुल जाएगा। ओके, कल IG2 मजा आएगा। ओके, कल जब जब मैं ओके सर। IG2 पढ़ा दूंगा तो आप कल से बनाना शुरू कर देना रिपोर्ट। सो हम क्लासेस के दौरान भी कुछ आपको अगर डाउट IG2 बनाना है, मैं 15-20 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। ओके, मुझे फायर हजार के बारे में पूछा गया तो मैं वेल्डिंग का भी लिख दिया, कटिंग का भी लिख दिया, ग्राइंडिंग का भी लिख दिया, XYZ बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिया। बट निबोस नहीं चाहता है कि इतना सारा दीजिए, आप फायर लिखिए, सिर्फ एक ही हजार को फोकस करके रिपोर्ट बनाइए। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाता है, आदत सा बन गया है शायद से लर्नर्स के लिए, या मैं इसको बुरा भी नहीं बोलूंगा, बट ये हैबिट हो गया है जॉब में काम करते करते,
फायर बोल दिया तो वेल्डिंग एंड कटिंग लिख के आ जाते हैं और वहां पे फंस जाए। उन्होंने बोला 1,000 लिखने के लिए, बट एक कैटेगरी के अंदर आपने क्या किया, 2,000 लिख दिया। तो वहां पे जब आप कंट्रोल मेजर देने जाते हैं, वहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि आपने जो वेल्डिंग कटिंग दोनों एक्टिविटी लिखा है, पहले किसको करेक्ट करेंगे, वेल्डिंग को या कटिंग को। उसके बाद उसी ग्राउंड में फेल हो गए। ओके, तो ये बेसिक लेवल को भी लेके आपको चलना पड़ेगा, तो थोड़ा शार्प होके करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। पासिंग परसेंटेज अच्छा है GIC2 में पहले भी, अभी भी और अच्छा हो जाएगा अगर आप क्लास में थरोली सुनेंगे और क्लास खत्म होने से पहले, यानी कि 20 तारीख से पहले आप अगर रिपोर्ट बराबर बना देते हैं तो आपके पासिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, ये मेरा फीडबैक है। बाकी रिमेनिंग आप लोगों का अपना कॉल रहेगा। आई डोंट वांट टू हियर एनी एक्सक्यूज कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। अगर आप ऐसे कुछ एक्सक्यूज लेके आएंगे तो आपके पास साथ जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। ओके, ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी Okay. यू ऑल एट ओके सर, Thank you, sir. गुड नाइट सर। Yes, sir. Good night. Good night. Good night.